ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನೇರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका से अनुरोध करूंगा कि वे कर्नाटक राज्य में मादक पदार्थों के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों पर हमें अपना मार्गदर्शन दें. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. The regional conference on drug trafficking and national security, which has been held in Bangalore, is a most welcoming feature. I thank the Honorable Union Home Minister, our beloved leader, Sri Amit Shah ji. I recognize the presence of the Union Home Minister and our beloved leader, Sri Amit Shah ji, Honorable Home Minister of Karnataka, Arvind Jnanendra ji, Sri A. Nammi Sivam, Honorable Minister for Home Pondicherry, Sri Praful Patel ji, Administrator Lakshadweep, Sri Ajay Kumar Balla, Union Home Secretary, Sri Pradhan DG NCB, Sri MB Rajesh, Honorable Minister for Local Self-Government and Home Affairs Kerala, Srimati Anjali Dwaraji, Secretary, Minister of Social Justice, and all the Chief Secretaries, DGPs, and all senior officers present during this conference. This conference plays a very important role both in doing social good as well as national security. The use of drug has got an effect right from a family as a unit to as large as a nation. The far-reaching consequence of consumption of drug has been known for ages. The method of manufacturing is also known, and it is changing very fast. The advent of synthetic drug has made our job difficult. In Karnataka, we have certain problems on hand, and I must put it on record that government of Karnataka in last 3 years has come down heavily on drugs and been successful too. We have unrelentingly waged war on drug. And we have been talking about zero tolerance. As you all know that the drug has deeply rooted in the society. So we uproot the drugs from the soils of this country. Having said that, we don't shrug away from our responsibility. We have waged a war, and every count
We have done the seizure, we have prosecuted them. As they adopt new methods, we have to be on the chase. There's a normal saying that crime leads the law. Crime leads the law. But we have to change the narration, and it has been changing in this country under our able leadership of our Union Home Minister Amit Shah ji, in all the fronts, and especially on the drug front. The whole scenario has changed, and now the drug peddlers are on the run thanks to the iron hand which he is dealing, Union Home Minister is dealing against the drugs. Just to put a case in point, for last 3 years, our seizure has been more than 5,000 cases every year. Earlier, it was around 1,000. Previous 7 years, just 1,000. The seizure has increased to 5,000. The second aspect, which is very, very important, we know the difficulties we face as far as prosecutions are concerned. And the law, what it has to be, and the operation of the law, what it is, there has been a lot of gaps. Therefore, even though we have taken a lot of measures, we feel a great deal of prosecution issues. But we have been able to prosecute the large number of people successfully, and sentences have been done for 4,000 cases in last 3 years, whereas it was around 1,183 in last 7 years. That shows the approach, the intent of the government of Karnataka. We have established 10 police stations. I want to bring to the kind notice of our Union Home Minister that pendency in FSL, cases, narcotic cases are concerned, is zero. We have got a zero pendency in our FSL. That's one of the greatest hallmark of how serious our government is there. We have established regional FSLs and central FSLs, and we deal it with highest priority. However, sir, as it has been shown in the present presentation, drug doesn't have any border. Drug trafficking doesn't have any border. Unless until a coordinated, as you have been leading and you have made a very big program and put a lot of efforts, unless until a cooperative and coordinated efforts is done as a teamwork, it will not be possible to control the drugs, especially the Bangalore. Bangalore is such a strategically situated, and you know that Bangalore is an international city. Highest number of people who come in and out of Bangalore. Bangalore is just 1 hour away from Tamil Nadu border. It's also 1.5 hours away from Andhra and Telangana border. And it is just almost 2 hours away from Kerala border. So this being a case, it has been a very easy for the drug traffickers to come in and out. So we need a very coordinated effort regarding narcotics between all the states. Then only it will be very worthwhile to give a name as a zero tolerance. Secondly, sir, we have to have the implementation of the anti-drug laws has to be simplified. An officer who goes on seize has to face a lot of procedural aspects, and almost he feels that that I have been put to a lot of pressure while seizing a drug more than the offender. So we need a very simplified procedural aspects.
and more courts. Karnataka has established special courts, but a special powers has to be given to the judicial officers, and especially PIT NDPS, which is a 98 thing, we operated first, and we are able to convict the habitual offenders, and he'll be put behind bar for 1 year. Such a measure is also necessary. We need a lot of cooperation as regarding the foreign nationals are concerned. Foreign nationals are got opportunity to get away with this act, and some of them in Bangalore, especially the South African countries, they want a drug case so that the expiry of their visa, they can continue, because there is a rule that unless until this case is clear, they can't go out. So these are the small issues where external affairs can be dealt with the cooperation of external affairs. We can really control the drugs within our border. And of course, special efforts has to be done across the border. Sir, I thank you and appreciate that the very fact that it is necessary to meet together and fight a drug which you are leading, and this Southern India Conference will certainly help us and take a long way in fighting the drugs. And your great deal of efforts and the details which you have gone through, the technology upgradation, and so on and so forth, with your efforts will be appreciated for a long time to come. Sir, we need your guidance time and again through this conference, otherwise also, and we all stand by you. The entire nation and all police officers of all the states and all the officers of all the states stand by you, that as far as fighting a drug is concerned, we will be all out and will give 100%. And lastly, we are now destroying more than 1 lakh kgs this time of drugs, which is a record of its sort, sir. And we continue to wage a war, and we'll have zero tolerance. And let there be a victory of a sane and a good people, and let us form a good society, remove this menace of drugs once for all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Honorable Excise Minister Kerala to address this August gathering. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ RRU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ RRU ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. Let me convey greeting trafficking requires inculcation of the also, highest ideals of citizenship some and important citizen-centric points services which we with need intellectual acumen, the help more of commitment Union and government professional competence. To inculcate these eternal First values of all, and ethos into every citizen, we are of the view and to that create drug trafficking is an well-trained organized personnel crime. in the field of national And in order to, security, the Honorable Prime fight Minister this of India organized and the then crime, Chief Minister of we Gujarat, need to have Shri a holistic Narendra Modi, approach, and we need to envisioned a strengthen university. Rashtriya coordination between various states and state agencies. As far as Kerala is concerned, we have to fight drug menace. We have employed strategies to reduce the supply of drugs and also to reduce demand and consumption of drugs. We have formed an anti-narcotics task force headed by ADGP Law and Order and District Anti-Narcotic Action Force at the district levels.
And our state excise department is also strongly dealing with this drug menace. We have conducted, both the police and excise have conducted special drives, and creation of database for effective monitoring of drug peddlers has been another important initiative on the part of Kerala. Opening of registry sheets against drug peddlers, initiation of action under 107 CRPC against drug peddlers and rowdies, initiation of bail cancellation against repeat offenders, effective use of Section 36A of NDPS Act, effective use of Section 68F regarding seizure and freezing of illegally acquired property, effective use of Section 34 of NDPS Act. This important sections, according to this important section, the judicial officer has the power to ask the person who is convicted of the offense to execute a bond to abstain from the commission of any other offense for the next 3 years. So we have extensively used this Section 34 of NDPS Act. Effective use of Section 31 of NDPS Act. This section has, according to this section, judicial officer has the power to enhance the punishment on subsequent conviction. So these are some of the important steps taken by us in enforcing various laws against drug trafficking. Secondly, we have organized a massive campaign throughout the states. It was a two-phase campaign. The first phase started from the 2nd October and that concluded in the 1st November with the formation day of Kerala. In that campaign, more than 1 crore people were mobilized, and the special focus was on student and youth. The special focus was on schools, colleges, and universities. Safe, secure, and developed nation. Safe, secure, and developed nation requires inculcating the highest ideals of citizenship and citizen-centric services with intellectual acumen, more commitment, and professional competence. To inculcate these eternal values and ethos into every citizen and to create well-trained personnel in the field of national security, the Honorable Prime Minister of India and the then Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi, envisioned a university, Rashtriya Raksha University. Rashtriya Raksha Sarvopari. Established in 2010, Raksha Shakti University in Gujarat started working diligently to strengthen one of the Panch Shaktis called Raksha Shakti for the progress of the nation. The university was transformed from the state level into the national level in the year 2020 as the Rashtriya Raksha University under the Ministry of Home Affairs, the Government of India. Serving the nation as an institution of national importance, the university aims to become an academic research training ecosystem for national security and policing. It endeavors to impart international standards of training, research, education, extension in security, and policing with the help of qualified, committed, and motivated faculty. With the guidance and patronage of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah and the Ministry of Home Affairs, RRU is laying strong foundation and preparing pool of dedicated young women and men who are aspiring to serve for a long time Central Armed Police Forces, State Police Forces, Paramilitary Forces, Defense Forces, and private and corporate security. Spread over 230 acres land in Lavad, Gandhinagar, generously donated by the Gujarat government, RRU has been receiving support from the successive leadership of Gujarat since 2010 and is being nurtured by the committed institutional leaders.
The university has 10 schools, which offers diploma, undergraduate, postgraduate, and doctorate level programs. The Security and Scientific Technical Research Association, SASTRA, is India's first national security innovation center with an objective to facilitate a three-way engagement between academia, industry, and the government for innovation, incubation, and technology acceleration in the security space. Global and national experts, practitioners, and faculty impart contemporary and futuristic training and education, working towards enhancing the police image for their competence, dedication, and caring services, as well as empowering women in security. University has state-of-the-art IT and cyber security lab, artificial intelligence lab and machine learning lab, forensic lab, brain mapping tools, human performance lab, just to name a few. As an impaneled organization of the External Affairs Ministry, Indian Technical and Economic Cooperation Program, RRU is reaching out to friendly and like-minded nations across the globe, emerging as a contributor to the global security knowledge resource base. School of the Internal Security and Police Administration works for smart police, who are strict but sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained. Coastal and marine policing, tourism policing, community policing, and working for public safety and security of women, weaker sections and minorities. The university stands out as a fulcrum of future of India's security needs, interests, and concerns. Women empowerment in security centers precisely to empower through tailor-made programs for women to join security forces, to prevent, reduce, and control the menace and threat of narcotics, explosives, among others. School of Internal Security and Police Administration. The school has dedicated dog squad with trainers and ready to groom boys and girls who want to join this emerging area of search and investigation of the national security. Continuous professional learning and enriching the knowledge base and skill set of emerging security needs. The online integrated platform, RISE, provides learning opportunities in any remote part of the country. With augmented base of 122 training programs and 6,500 beneficiaries till now. The university runs psychotherapy centers at villages like Lavad, Sampa, and Dahegam as a part of extension and outreach initiative. RRU offers modern classroom facilities, advanced laboratories and equipment, digital as well as physical library, normal and adventure sports facilities, and good quality of hostels. University NCC Battalion resonates the call to join armed and security forces. Strategic languages, knowledge of national and international affairs, insights into defense and military history of the nation and globe, complemented by strong and rigorous physical and mental fitness training, is an integral daily life of RRU boys and girls. During the university's first convocation, 1,092 young graduates were awarded various degrees. राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अपना व्याप बहुत तेजी से बढ़ाने जा रही है। अब तेजी से सभी क्षेत्रों में जाकर अपना एक-एक कैंपस कम से कम खुले क्षेत्रवार इसकी चिंता करेगी। To spread the wings and scale to the newer heights, RRU has opened its first off-campus center in Arunachal Pradesh and the other one in Uttar Pradesh. In a short span of time, RRU has generated keen interest of doyens of the national security field. आज हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय देश के विश्वविद्यालयों में एक अपनी साख, एक अपनी विश्वसनीयता बनाता जा रहा है. Skilling the aspirants, upskilling the in-service personnel,
and reskilling ex-servicemen and women. RRU prepares right national security-related human resource for the nation. यूनिवर्सिटी देश का गहना है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन मनन शिक्षा ट्रेनिंग होगी वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे. Rashtriya Raksha University, the emerging global address for security education. Safe, secure, and developed nation. 293 cases were registered against the drug peddlers under the NTPS Act, and 347 kgs of ganja was seized from the possession of 600 ton drug peddlers, which is included 121% from other state foreigners. The Pondicherry UT also comprises of Karaikal, Mahe, Yanam regions, which are separated by hundreds of kilometers and surrounded by Tamil Nadu, Kerala, and Andhra Pradesh respectively. The traders cannabis leaves. The ganja is smuggled to the Pondicherry through roads, train from Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In few cases, there are inputs that the drugs have emanated from the Naxal-infected Andhra Pradesh-Odisha borders. That the movement of narcotic drugs poses the significant threats to the daily laborers and student community at large in the UT of Puducherry. Besides, Puducherry UT being tourist destination, attracting tourists across the country and the world, encourages the ganja peddlers to include in the social means. Puducherry police is taking all effort to check the supply chain of the narcotic drugs by the physiotropic substances. In order to curb this social means, and initiative was launched by the Puducherry Police Department in the name of Operation Vidyal. On 19th July 2021, the operation is focusing on cracking down heavily on drug peddlers syndicates, which ultimately resulted in 90% increase in registration of cases in 2022 and 140% increase in number of the drug peddlers. A special unit-wise anti-narcotic task force functioning under the supervision of Superintendent of Police is closely watching the movement of ganja peddlers, including their suppliers. IGP Puducherry has been made the nodal officer. Regular drives are conducted by the ANTF team along with local police to unearth the trade smugglers and the movement of contraband items, illicit NTPS items. Then the ANTF has been regularly conducting drug abuse awareness drives, educational institution and in the affected areas, along with the expert from the health department, education department and NGOs. Action against the notorious ganja peddlers under the PIT NTPS Act has been initiated, and so far 3 persons were detained under the said act. All the trains arise in Pondicherry has regularly been checked by the narcotics by the police department with the help of sinister dogs. Passengers of interstate buses, trains and private vehicles are regularly checked for deterrent and surveillance. Anti-narcotic cell has been constituted in about 36 educational institutions to conduct awareness programs inside the institution and in the immediate neighborhood areas, for which necessary support is being extended by the anti-narcotic task force and local police station. Efforts are being made to cover the educational institution for constituting ANC in case of one of them with the support of Department of Education, Puducherry.
In order to control heinous crimes, Operation Trishul has been initiated by the Puducherry police. The heinous crimes are solved within the record time. The means of organized crimes is detailed with an iron hand. The extraordinary rasket having its roots in the jail has been demolished and criminals involved were apprehended. This has given a big relief to the traders and spokers in Pondicherry. They are doing their business with ease. Then the notorious criminals who have been caught under the Operation Trishul were also found to be involved in sale of contraband. After the Operation Trishul, it has become near impossible to for sale narcotic and contraband for quick money by hardcore criminals. However, a dedicated unit wise anti-rowdy squad under the supervision of a superintendent of police was established to control the nefarious activities and notorious and narco offences ineffectively utilized to investigate NTPS cases and the arrested, suspected, drug peddlers and accused persons. Pondicherry police is maintaining constant vigil and surveillance on the drug trading across land, maritime routes. Then the Indian Coast Guard Station, Pondicherry, and the Coastal Police along with Fisheries Intelligence Bureau and Narcotic Control Bureau are sharing real-time information and intelligence. The community listening group in the fishermen villages are also activated to keep a close watch for any smuggling activities in the coastal regions. However, there has been no intervention on the sea routes so far. Coordination meetings were held with the stakeholders, state level and district level. So far, 4 state level ENCORE committee meeting and 2 district level ENCORE committee meeting has been convened under the chairmanship of Chief Secretary to government and district collector respectively to monitor the progress activated by the various departments like police, health, social welfare and education department, etc. Drug disposal committee has been constituted separately for Pondicherry and Karaikal district to dispose the seized narcotic drugs and physiotropic substances. Action has been initiated to dispose the seized narcotic drugs and physiotropic substance through the court concerned. Checklist has been prepared and circulated for case reported under NTPS Act, which cover both per and post investigation with an objective to increase the conviction rates. It is pertinent to state that under Section 36(2) of NTPS Act, 2 special court at Pondicherry and Karaikal districts are functioning since the year of 2004 onwards to deal with the case under NTPS Act. Regular meeting and conducted with the neighboring district police to contain the cross-border smuggling the narcotic items, effective coordination in substance with neighboring district police, courier service agents, post office, private bus agents, private parcel service and railway authorities to contain cross-border smugglers of narcotics. At Puducherry UT level, police control room is acting as a nodal point to collect information and reply queries from the general public related to narcotic drugs. Then the physiotropic substance, the toll-free helpline number 112 is designated for this purpose with the designated WhatsApp number 9489205100. Awareness drives are conducted by senior police officer at professional colleges and higher secondary school
appealing to the younger generation to not get addicted to the social means. Drug such drives, the participants are asked to take oath to not indulge in drug abuse, and they would also help assist the law enforcement agencies in curbing evil from the society by prevent prompt information to the police. Moreover, counseling is being done at the police station for the drug abuse victims along with their parents and relatives. As a part of community policing, an area-wise autophagy in Orland-Bay PS limit has been adopted by police in order to prevent crimes, drug abuse, and to uplift the social status of young living in the area. The initial outcomes has been promised. As the successor to Muscat and Smile operation in 2015, Project Punnagai was conceptualized by Pondicherry Police to transform the lives of children who are in need care protection by bringing them to skill development programs for their better future. So far as many as 2,500 such children were inducted for skill training under this project and got placed in various industries. Cycle rallies were conducted by police and student community on the occasion of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking to create awareness on drug abuse. The Social Welfare Department has conducted various awareness programs in different phases to control the drug users. It also opened de-addiction facilities to the drug-affected peoples, including in urban slum. So far, 180 persons benefited. Drug abuse prevention awareness was conducted with women self-help groups, out of which around 850 self-help groups have benefited so far. Similar program on awareness of drug abuse prevention were also conducted at the Central Prison, the Pondicherry, where around 300 prisoners benefited. Awareness program were also conducted at industries where 225 laborers benefited. Moreover, the health department has initiated various means for prevention of drug abuse by conducting a team under the health secretary and following day-to-day progress of the mission. Around 300 students for NCC, NYK and NSS conducted an awareness rallies part of Nasha Mukt Bharat Abhiyan on 12 September 2022. In order to control the drug means more effectively than the proposal for grant of financial assistance under the scheme Assistance to State for Narcotics Control to the turn of rupees 10.33 crores for the period of 4 financial years 2022-23 to 2025 to 2026 was sent to the Narcotic Control Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi by the Government of Puducherry on 5/7/2022. The same is under process. The Government of Puducherry has sanctioned to start new forensic unit wise NDA, cyber question documents, toxicology and narcotics and regional foreign science laboratory, Puducherry, additional infrastructure being made in the existing RFSL premises to accommodate these new 6 units. The Government of India released 3.39 crores for strengthening of the RFSL under the Nirbhaya scheme. The Government of Puducherry has requested the Honorable Union Home Minister to consider a grant to the turn of rupees 2,328 crores for capital infrastructure in Puducherry, out of which 100 crores is for establishing drug de-addiction centers. In the end, I need to reiterate that drug trafficking is a serious threat to our national security and requires immediate action. It is complex problem, social welfare, health, and justice. By working together, we can build a safer and secure future for ourselves
and our future generation. I request the Honorable Home Minister to sanction the required financial assistance to the police department and other departments of our government of Puducherry for capacity building measures to eradicate these social means from our society. I am sure that the government of Puducherry will continue to serve the people in a bigger way by eradicating this evil. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सर। अब मैं माननीय प्रशासक लक्षद्वीप को उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। महोदय। आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में हम सभी के बीच उपस्थित भारत सरकार के सहकारिता मंत्री परम श्रद्धेय अमित शाह जी, कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बोम्मई जी, सम्माननीय मंच, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, नमस्कार। मित्रों, आज ये जो मीटिंग हो रहा है, इसका महत्व कितना है? पिछले कई सालों से इस विषय में सबने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया होगा, लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है, गौरव भी हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में और एवं मार्गदर्शन में इनके कार्यकाल में इस गंभीर समस्या को कैसे रोका जाए, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस संदर्भ में जो प्रयास किए गए हैं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, पूरी एमएचए की टीम को अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये कितनी गंभीर समस्या है। देश को बर्बादी से बचाना, देश के युवा धन को बर्बादी से बचाना, इस विषय में जितना काम पिछले 3-4 साल में जो हुआ है, शायद ही पहले कभी हुआ हो। ये मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ये कंपैरेटिव भी नहीं है, लेकिन कितनी संवेदना के साथ काम हुआ है, देश के प्रति उनका कितना भाव है, युवाओं के प्रति उनके मन में कितनी भावनाएं हैं, ये इसका प्रतिबिंब है। मित्रों, जहां तक इस विषय को लेकर संघ प्रदेश लक्षद्वीप का सवाल है, हमारी यूनियन टेरिटरी देश की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी में कुल 32 आइलैंड है, 10 में आबादी है, बाकी जगह पर आबादी नहीं है। हमारे वहां भी गांजा की तस्करी के केस और कंजम्पशन के केस भी हमने इस संदर्भ में मामले दर्ज कराए हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत नेवी हो, स्थानीय पुलिस हो, मछुआरे हो, इन सब के साथ मिलके तटीय सुरक्षा, इन सभी चीजों में हमने गंभीरता से कई कदम उठाए हैं। हमारे जो अनइनहैबिटेड आइलैंड जो है, जहां आबादी नहीं है, गैर आबादी वाले जो आइलैंड है, उस पे इन फ्यूचर भी थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। मेरे कोस्ट गार्ड के मित्रों और नौसेना के द्वारा वहां पे नियमित रूप से सर्वेलेंस भी हो रहा है, फिर भी वहां इलीगल मूवमेंट भी हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आगे आने वाले दिनों में भी थोड़ी विशेष चिंता करने की आवश्यकता है। कारण ये है, लक्षद्वीप के मिनिको आइलैंड के पास से इंटरनेशनल सी रूट चैनल नंबर 9 वहां से पास होता है। दिन में
कार्गो शिप ऑन एन एवरेज 27 से 30, इट मीन्स पर आवर एक कार्गो शिप वहां से पास होता है। और इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी हो सकती है। आंकड़े अगर अब देखे जाए तो मैं अभिनंदन करता हूं मेरे कोस्ट गार्ड के मित्रों का। इन्होंने पिछले 20, 21, 22, 3 साल में 4 बड़े रैकेट पकड़े हैं। हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भारत सरकार का और कोस्ट गार्ड के तालमेल से हमने करीब 5,000 करोड़ की लागत का नशीली पदार्थों का क्वांटिटी हमने पकड़ा है। मैंने पूरी टीम ने, उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे आने वाले दिनों में भी भारत विशेष हमें जो भी दिशा निर्देशन दिए जाएंगे, इसमें हम पूरा ईमानदारी से प्रयास करके इस गंभीर विषय में युवाओं को कैसे बचाया जाए, देश को कैसे बचाया जाए, इसका हम पूरा निष्ठा से काम करेंगे। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे आगे की कार्रवाई के साक्षी बनने हेतु सभागार में प्रवेश करें। मैं सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को सूचित करना चाहूंगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि एक नेशनल नोडल एजेंसी है, ड्रग्स के अवैध व्यापार, तस्करी और पकड़ी जाने वाली ड्रग्स को विनिष्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निष्ठापूर्वक कर रही है और लगातार इस गंभीर समस्या से निजात पाने के प्रयासों में लगी है। माननीय, इस दिशा में एनसीबी द्वारा जून 2022 से ड्रग विनिष्टीकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के दौरान प्राप्त हुई हैं और अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सभी क्षेत्रीय इकाइयों तथा राज्यों के एएनटीएफ द्वारा लगभग 7,174 करोड़ मूल्य के 5,85,300 किलोग्राम ड्रग्स को विनिष्ट किया जा चुका है तथा इस वर्ष एनसीबी के स्थापना माह अर्थात मार्च में एनसीबी की विभिन्न इकाइयों विशेष अभियान ड्रग्स को विनिष्ट किया जा चुका है तथा इसी क्रम में आज एनसीबी द्वारा लगभग 98 में जब्त मादक पदार्थ जैसे कोकीन, हेरोइन, एटीएस, गांजा, अफीम, हशीश इत्यादि को विनिष्ट किया जाएगा, जिनका मूल्य लगभग 1,235 करोड़ है। एनसीबी के द्वारा किए गए विनिष्टीकरण के प्रयासों पर आधारित एक लघु फिल्म अब आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि हम भारत में नारकोटिक्स द्रव्यों को आने भी नहीं देंगे और भारत को उसका रास्ता भी नहीं बनने देंगे। यहां से गुजरकर कहीं और भी नहीं जाएंगे और कहीं और से यहां पर भी नहीं आएंगे। ये दोनों की रोकथाम करने के लिए कई सारे कदम ये 2 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उठाए। इस उपलक्ष्य पर एनसीबी द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए जब्त मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण के लिए एक विशेष अभियान 1 जून 2022 से चलाया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह निर्णय लिया कि 75 दिनों के इस विशेष अभियान के दौरान 75,000 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण ब्यूरो की सभी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा किया जाएगा। एनसीबी ने समय से पूर्व ही मात्र 60 दिनों में उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तथा नशे के विरुद्ध इस व्यापक लड़ाई में देश के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस अभियान के अंतर्गत माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा 30 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में 31,000 किलोग्राम
8 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में 40,000 किलोग्राम तथा 26 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में 12,178 किलोग्राम मादक पदार्थों का सार्वजनिक रूप से विनिष्टीकरण किया गया। मादक पदार्थों की जब्ती और उनके विनिष्टीकरण के इस विशेष अभियान में 1 जून 2022 से 23 मार्च 2023 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सभी क्षेत्रीय इकाइयों तथा राज्यों के एएनटीएफ ने साथ मिलकर लगभग 5,85,322 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को विनष्ट करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका मूल्य विनिष्टीकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ताकि भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के संकल्प को सार्थक बनाया जा सके। इस अभियान को जारी रखते हुए आज माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में 9,298 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण एनसीबी की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया जाएगा, जिसका मूल्य लगभग 1,235 करोड़ है। ये विशेष विनिष्टीकरण अभियान इसी उत्साह और तत्परता के साथ आगे भी सक्रिय रूप से जारी रहेगा। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। समग्र भारत में ड्रग्स के विरुद्ध आओ मिलकर लड़ें निर्णायक युद्ध। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज की ड्रग डिस्पोजल प्रक्रिया का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई ड्रग डिस्पोजल प्रक्रिया के लिए सभागार में सभी अतिथि गणों का ध्यान एनसीबी की इकाइयों एवं कर्नाटका तथा तमिलनाडु पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे ड्रग डिस्पोजल की ओर ले चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनसीबी इकाई पटना द्वारा 4,542 किलो, एनसीबी इकाई जोधपुर द्वारा 2,837 किलोग्राम, एनसीबी इकाई इंदौर द्वारा 1,034 केजी, एनसीबी इकाई कोचीन द्वारा 340 केजी, एनसीबी इकाई दिल्ली द्वारा 313 केजी, एनसीबी इकाई चंडीगढ़ द्वारा 228 केजी ड्रग्स तथा कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा 58,656 किलोग्राम एवं तमिलनाडु पुलिस द्वारा 1,000 केजी ड्रग्स को विनिष्ट किया जा रहा है। महोदय, आज के दिन कुल 68,954 किलोग्राम ड्रग्स को विनिष्ट किया जा रहा है। अभी तक सभी एजेंसियों के सामूहिक प्रयास से 5,94,620 केजी जब्त मादक पदार्थों को विनिष्ट किया जा चुका है। इसमें एनसीबी द्वारा 1,29,363 किलोग्राम ड्रग्स का विनिष्टीकरण किया गया है एवं राज्यों के एनटीएफ द्वारा 4,65,235 किलोग्राम ड्रग्स का विनिष्टीकरण किया गया है। इस विशेष अभियान को हम आगे भी जारी रखें। महोदय, इस वर्ष 26 जून तक, जिसे हम मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, एनसीबी द्वारा 1,50,000 किलोग्राम ड्रग्स के विनिष्टीकरण का लक्ष्य रखा गया है। सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि ड्रग्स डिस्पोजल के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों का तालियों से उत्साहवर्धन करें। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सारगर्भित शब्दों से इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करें। महोदय। देश के दक्षिण हिस्से में ड्रग के खिलाफ लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण ये बैठक में उपस्थित कर्नाटक के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, गृह मंत्री कर्नाटक श्री ज्ञानेंद्र जी, प्रशासक लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल जी, गृह मंत्री पांडिचेरी श्री ए नमस्शिवाय जी, आबकारी मंत्री केरल एम बी राजेश जी,
श्री अजय भल्ला जी, गृह सचिव भारत सरकार, अंजलि भावरा जी, सचिव सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्री SN प्रधान, DGP NCP, और आज आए हुए सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की एक बैठक समग्र देश के हर हिस्से में ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने हाथ में ली है, वो क्षेत्रीय बैठक की परंपराओं का एक हिस्सा है। इस बैठकों के माध्यम से ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई है, ये कोई एक सरकार की लड़ाई न रहते हुए सभी सरकारों के सभी डिपार्टमेंट्स होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में आए और सरकारों से भी आगे बढ़कर ये लड़ाई समाज की लड़ाई बने, जनता की लड़ाई बने और अंततोगत्वा हम ड्रग के दूषण से देश को मुक्त कर पाए। यही इस बैठक का उद्देश्य है। ड्रग, ये हम सब जानते हैं, व्यक्ति, समाज और देश के लिए एक ऐसा नासूर है कि जिसको समय रहते कंट्रोल न किया गया हो तो फिर वो कंट्रोल में आना असंभव हो जाता है। इसलिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत सरकार के गृह विभाग ने नशा मुक्त भारत का एक लक्ष्य सिद्ध किया है। मोदी जी ने हमारे सामने ड्रग फ्री सोसाइटी का लक्ष्य रखा है और हम सब ने इसको साथ में लेकर एक साझा प्रयास से इसको आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक प्रमुखतः 2 लक्ष्य देश की जनता के सामने रखे हैं। एक, 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, ये राष्ट्र संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, और 2025 तक ये देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ये दोनों लक्ष्यों को अगर हमने तय करना है तो ड्रग फ्री सोसाइटी इसकी बुनियादी जरूरियात है। और इसके खिलाफ जो लड़ाई है, कोई एक सरकार, कोई एक डिपार्टमेंट लड़ेगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। देश की सारी सरकारों ने साथ में मिलकर आके लड़ना पड़ेगा। देश की सभी सरकारों के सभी विभागों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इससे आगे ले जाकर ये लड़ाई को घर घर की लड़ाई, जन जन की लड़ाई बनाने की दिशा में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक सरकारी डिपार्टमेंटों का सवाल है, होम डिपार्टमेंट की, हर सरकार के गृह विभाग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, मगर इसके साथ रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कल्चर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे डिपार्टमेंट हेल्थ विभाग के साथ जुड़कर जब ये अभियान को आगे बढ़ाते हैं, तभी हमारा अभियान गंतव्य को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। विगत 4 साल से हमने इस अभियान को अलग डायमेंशन खड़े करने का प्रयास किया है। हमें एडिक्शन में एडिशन न हो, इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के खिलाफ, एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया है। इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजनाएं बनाई है। जब तक ड्रग के समूचे कारोबार के तंत्र का डिटेक्शन नहीं करते, तब तक
हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैं सभी सर्दन राज्यों की एजेंसियों को और राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं कि हमारे अप्रोच के अंदर हमने बदलाव लाना पड़ेगा। हमने बॉटम टू टॉप और टॉप से बॉटम इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच लेना पड़ेगा। बॉटम टू टॉप मतलब एक सबसे बड़ा, जैसे अभी प्रफुल्ल भाई ने कहा, दरिया के अंदर हमारे कोस्ट गार्ड के मित्रों ने आईबी और रॉ की सूचना के आधार पर ढेर सारे मादक द्रव्य पकड़े। तो वो एक इंडिविजुअल केस नहीं है, वो देश में कहां आना था, आकर छोटी सी छोटी व्यक्ति तक कैसे पहुंचना था। तो वो केस को वहां से पकड़कर इसके संपूर्ण वितरण की व्यवस्था को नष्ट करने तक ले जाए। और एक व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो वो तो रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास करेंगे, परंतु उसको कहां से मिला और वहां से लेकर देश में कहां से घुसा तक का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो टॉप डिटेक्ट होता है तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक के पूरे तंत्र को नष्ट करने तक इन्वेस्टिगेशन को हमने समाप्त नहीं कर दी, तभी ड्रग का डिटेक्शन और नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कल्प्रिट का डिटेंशन हमने बहुत हल्के से, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, कई बार नजर में आता है कि हम बहुत हल्के से इस इन्वेस्टिगेशन को लेते हैं। हमारे पास कठोर से कठोर प्रावधान हमारे कानून के अंदर है। एनडीपीएस एक्ट का उपयोग हम ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप अपने राज्य में रिव्यू कर देखिए कितने कारोबारियों की संपत्ति जब्त की, कितने कारोबारियों को आपने डिटेंशन का उपयोग कर जेल में डाला है। आसानी से किसी की बेल नहीं होनी चाहिए। इस केस को सारे इसके एनडीपीएस एक्ट के कठोर से कठोर प्रावधानों का उपयोग करते की रोकथाम करना बहुत जरूरी है। और ढेर सारे पोर्टल बताए हैं जिसके अंदर आपको कानूनी मार्गदर्शन भी मिलता है, केस की सक्सेस स्टोरी भी इसके अंदर उपलब्ध है, और जरूरत पड़े तो सीधा एनसीबी का संपर्क कर आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। मित्रों, सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि आप सब ने मिलकर ये चारों मुद्दों को, ड्रग्स, नेटवर्क, कल्प्रिट और एडिक्शन के लिए रिहेबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों का एक संपुट बनाकर ये लड़ाई को समग्रता के साथ ले जाना पड़ेगा। मित्रों, नारकोटिक्स के डिस्पोजल का जो अभियान चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। मेरा आग्रह है हर एक राज्य को हर 3 माह में मंत्री लेवल पर इसका रिव्यू हो, होम सेक्रेटरी डीजीपी लेवल पर इसका रिव्यू हो और नष्ट पदार्थ किए जाए। इससे 2 प्रकार के फायदे होते हैं। कई बार मादक द्रव्यों को पुलिस की और तंत्र की कस्टडी से चुराने के भी बहुत सारे मामले मेरे पास पत्रों के माध्यम से गृह मंत्रालय तक पहुंचते। एक तो एक रुकेगा और दूसरा इससे ये लड़ाई में जोम आएगा, उत्साह बढ़ेगा। लड़ने वाले सभी लेवल के हमारे सहयोगी है, उनका उत्साह इससे बढ़ना है। और मुझे इस बात का आनंद है कि हमने 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर 75 दिनों में 75,000 किलो ड्रग को डिस्पोज करने का एक लक्ष्य रखा था, और आज मैं कह सकता हूं कि एनसीबी ने वो लक्ष्य को तो सिर्फ 60 दिनों के अंदर पूरा कर दिया, परंतु अब तक लगभग 5,94,620 अप्रोक्सीमेटली 6 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करने में हमें सफलता मिली है। ये हम सबकी सहयोग से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी जो मैं ड्रग नष्ट किया गया है इसका मूल्य 8,400 करोड़ से 8,400 करोड़ से भी ज्यादा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी हम सबकी साझा उपलब्धि है। मैं सभी राज्यों के तंत्रों को और सभी राज्यों की चुनी हुई सरकार को, भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, ये 3 सूत्र के आधार पर ही ये लड़ाई को
हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ लड़ सकते हैं। हमने राज्य ने नीचे एक ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा, हर जिला के साथ राज्य इकाई का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो, और हर राज्य का भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो। और विद इन गवर्नमेंट जो 6 डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर सकते हैं, वो 6 के 6 डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो, वो बहुत जरूरी है। हम सब ने यहां से जाकर ये 3 जो सूत्र है, इसको सरलता से कहूं, संस्थागत संरचना की मजबूती करना, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण करना और विस्तृत जागरूकता अभियान, इसके लिए हमने प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों से जानकारी भी साझा करना चाहता हूं कि हमने जो अभियान जून 19 से लिया है, इसको काफी सफलता मिली है। ये आंकड़े का कंपैरिजन डिपार्टमेंट की और सरकारों की हौसला अफजाई के लिए, कोई अन्यथा न ले इसको। 2006 से 13 तक का एक कालखंड निकाल ले तो 1237 अरेस्ट किए गए थे, और 2014 से 22 तक 3544 181 मामले हैं। और अरेस्ट के अंदर पहले 1363 अरेस्ट हुए थे, 1363, और अब 5408 अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 300% की वृद्धि है। मामले केस रजिस्टर करने में 181% की वृद्धि और अरेस्ट में 296% की वृद्धि। और सीज ड्रग का जहां तक सवाल है, 6 से 13 में 1.52 लाख केजी ड्रग सीज हुआ था, परंतु 14 से 22 में 1.52 लाख से बढ़कर 3,73,000 3.73 लाख केजी ड्रग को हमने सीज किया है। ये लगभग 2 गुना है, 100% इंक्रीज है। और इसकी क्वालिटी के बारे में आपको इसकी कीमत से ही मालूम पड़ेगा। 2006 से 13 में जो ड्रग सीज हुआ था, इसकी वैल्यू थी 786 करोड़, और 14 से 22 में जो ड्रग सीज हुआ है, इसकी वैल्यू है 22,000 करोड़ रुपीस। इससे मालूम पड़ेगा कितने क्वालिटी केस हुए, महंगे ड्रग जब्त किए गए हैं। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं हुई, जबकि क्वांटिटी तो बड़ी है, क्वालिटी भी बड़ी है। कोकीन, केटामाइन, मेफेड्रोन जैसी कई सारी महंगे ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती में गुणा हुई है। और पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है। मतलब 61 नए साइकोट्रोपिक पदार्थ को हमने अधिसूचना निकालकर बैन करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, एक क्षेत्रीय सम्मेलन करने का उद्देश्य है कि आप यहां से जाकर आपके राज्य में क्षेत्रीय सम्मेलन करें। ये लड़ाई जब तक जिलों की लड़ाई नहीं बनेगी, हम कभी सफल नहीं होंगे। इस लड़ाई को जिले तक ले जाना है, गांव तक ले जाना है, स्कूल्स तक ले जाना है। एक जबरदस्त बड़ा जागरूकता अभियान ढेर सारे एनजीओ को साथ में जोड़कर हमने लाना पड़ेगा। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अभियान को जन जन का अभियान नहीं बनाते हैं, तब तक हम खतरे से मुक्त नहीं हो सकता है। एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा नासूर है जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। कई ऐसे देशों के उदाहरण सामने हैं जहां 70% लोग, 60% लोग, 30%, 40% लोग ड्रग एडिक्ट हो गए। क्या होता होगा उस देश का? हमने समय पर जागरूकता लानी होगी और इसके खिलाफ लड़ना होगा। मैं आज जब दक्षिण छोर पर आया हूं, तब महासागर मार्ग और तटीय सुरक्षा पर भी फोकस बढ़ाने की जरूरत है। ये बात
ठीक है कि विगत 3 सालों में हमारे महासागर की सुरक्षा करने वाली एजेंसियां, नेवी और तटरक्षक ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ राज्यों की पुलिस ने भी बहुत अच्छा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। हमारा समुद्री मार्ग पूरी दुनिया में कहीं पर भी नारकोटिक्स जाने के लिए खुला नहीं रहना चाहिए। हमारे 3 प्रमुख मार्गों में दक्षिणी मार्ग जो है मकरान तट से हिंद महासागर क्षेत्र का जो मार्ग है, इसमें हमारी चौकसी बढ़नी चाहिए और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान से ईरान होते हुए ज्यादातर समुद्री जहाज पर ड्रग लोड होती है और लंका से लेकर अफ्रीका तक जाती है। हमने इसको रोकना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं रोकेंगे हमारे यहां भी ड्रग आते हुए हम रोक नहीं सकते हैं। हम ऐसे ईज के साथ नहीं रह सकते हैं कि ये तो बाहर जा रहा है। जो बाहर भेज रहे हैं उनका अगर आर्थिक नुकसान आपने नहीं किया, उनको चोट नहीं पहुंचाई, उनको क्षतिग्रस्त नहीं किया, तो वो कल हमारे यहां भी भेजेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी ड्रग का व्यापार करने वाले व्यक्ति को, इंस्टीट्यूशन को और व्यापारियों को हमने वीक करना है, उसको नेस्त नाबूद करना है। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने हेतु एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने लिया है। 60 से 70% नारकोटिक्स आज समुद्र मार्ग से तस्करी होने के आंकड़े, अनकन्फर्म आंकड़े हमारे पास है। इसके लिए एनकोड कमेटी की बैठक में कोस्ट गार्ड, नेवी और पोर्ट अथॉरिटी को भी अब स्टेक होल्डर बनाया गया है। तो स्टेट लेवल की जो एनकोड कमेटी की बैठक होती है, इसमें विशेषकर दक्षिणी राज्यों में कोस्ट गार्ड, नेवी और पोर्ट अथॉरिटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हिस्सा ले और वो रिस्पॉन्ड करे। इसके लिए हमने प्रोएक्टिव होकर प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब एनकोड के तंत्र के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूं। 2019 के बाद एनकोड के तंत्र में 2 बार बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 4 स्तरीय एनकोड की व्यवस्था अस्तित्व में आई है। शीर्ष स्तर पर एनकोड समिति है जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन करती है। कार्यकारी स्तर पर भी केंद्रीय स्तर पर एक एनकोड समिति है। राज्य स्तरीय एनकोड समिति है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है और जिला स्तरीय एनकोड समिति है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में। बड़े विनम्रता से एनसीबी डायरेक्टर ने बताया कि भाई आप लोग अपलोड नहीं करते हो, इसलिए कई जिला कमेटी की बैठकों के आंकड़े शून्य है। मगर मैं निर्ममता से बात करना चाहता हूं, आज भी जिला की एनकोड समिति की बैठकें नहीं होती है और मैं अपने आप सभी को बताना चाहता हूं, जब तक जिला स्तर की एनकोड समिति की बैठकें नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और जो पोर्टल बना है इसमें इसको आप रेगुलरली आपके राज्य से अपग्रेड करते जाइए। समग्र देश को उत्साह बढ़ता है, ये लड़ाई को एक ताकत मिलती है कि 500 जिलों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग कर ली। ये जो नहीं करते इसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, परंतु जिला स्तर की बैठकें हमने करनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत आग्रह के साथ विनती करना चाहता हूं। एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक सिम्स ई पोर्टल भी बनाया है, वो ट्रेड एनालिसिस और डेटाबेस मैनेजमेंट का आपको जानकारी देता है। केंद्रीकृत एनकोड पोर्टल भी बनाया है जो डेटा इंटीग्रेशन का काम करता है और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में आपके लिए उपलब्ध है। और हमने एनसीबी का उन्नयन भी, अपग्रेडेशन भी काफी किया है। 5 नए अंचल कार्यालय बनाए दिए गए हैं, देहरादून, अमृतसर, मंडी और अजमेर। और इसके साथ साथ जुड़े हुए जो पहले से रांची, भुवनेश्वर, इम्फाल, गोवा, मंदसौर, कोचीन, मदुराई और हैदराबाद, तो ये सारे अंचल कार्यालयों के माध्यम से
आपकी एनसीबी आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। एक डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने के लिए भी हमने कहा है। आंध्र का भी सर्कुलर दिखाई नहीं पड़ता था। बन गया हो तो पोर्टल पर डाल दीजिए, न बना हो तो तुरंत बना देना चाहिए। राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल की भी स्थापना की है। इसमें भी हम आत्मनिर्भर बने हैं। एक जो कुत्तों की नस्ल है वो भारतीय नस्ल है, जिससे आप सभी को बहुत आनंद होगा। हमने बहुत परिश्रम कर एक भारतीय नस्ल को डेवलप किया है। जब्त दवाओं के निपटान के लिए क्वार्टरली इसको मॉनिटर करना चाहिए और दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं के दुरुपयोग के रोकने के लिए भी हमें आपके सुझाव चाहिए, जो आप एनसीबी के माध्यम से भारत सरकार के गृह विभाग को भेज सकते हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जब तक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशल टाइप की प्रोसिक्यूशन की ये कला है। हमारे सभी अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। विभिन्न रैंकों और स्तरों पर 5 अलग अलग प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को एनसीबी के द्वारा बना दिया गया है। बहुत मेहनत हुई है, मैं जानता हूं। ये मॉड्यूल को राज्यों ने एडॉप्ट करना चाहिए और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। चाहे डीवाईएसपी का प्रशिक्षण हो, चाहे पीएसआई का। आपके राज्यों के स्तर पर कांस्टेबल, डीवाईएसपी और पीएसआई और डीवाईएसपी 3 डायरेक्ट भर्ती होती है। तीनों रिक्रूटमेंट के बाद प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में ये 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल है। इसको स्टेज वाइज आपने ट्रेनिंग के वक्त ही इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ने इस मॉड्यूल को अपने पाठ्यक्रम के अंदर अपना लिया है। मेरा सभी राज्यों से भी अनुरोध है कि आप भी इसको अपनाइए। नार्को अपराधियों पर एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस निदान हमने शुरू किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका फायदा कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये केंद्र और राज्य का मुद्दा नहीं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश के भविष्य का मुद्दा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाने का मुद्दा है। हमारे देश के अर्थतंत्र को खोखला करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई का मुद्दा है। देश की सुरक्षा में जो सेंध लगाना चाहते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई का ये मुद्दा है। क्योंकि आप सब जानते हैं, इसके साथ अब साइबर अपराध भी जुड़ चुका है, जाली नोट का कारोबार भी जुड़ चुका है, टेरर फंडिंग भी जुड़ चुका है और नेशनल सिक्योरिटी भी जुड़ चुकी है। और युवाओं की बर्बादी तो है ही है। तो इसको कृपया कोई भारत सरकार का अभियान न माने। ये अभियान हम सबका साझा अभियान है, जनता का अभियान है। लोगों की भलाई के लिए इसको करना है, देश की सुरक्षा के लिए करना है। इस स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़े। और फिर से मैं एक बार नेटवर्क का मॉड्यूल इन्वेस्टिगेशन पर थ्रस्ट देना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार का आइसोलेशन में न हो, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन पर जब तक हम थ्रस्ट नहीं देंगे, ये नहीं होगा। एनडीपीएस के कठोर प्रावधानों का उपयोग करते वक्त झिझके मत, निर्मम होकर, रूथलेस होकर एनडीपीएस के कठोर प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए। ऐसी मेरी आप सभी को विनंती है। आज आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे विश्वास है आपको ढेर सारा साहित्य भी एनसीबी की ओर से दिया जाएगा। इसका उपयोग कर अपने अपने राज्य के अंदर ये अभियान को गति दीजिए। और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज, इस लक्ष्य को हम सब सिद्ध करें, यही आप सभी से अभ्यर्थना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा दिए गए विचार, सुझाव और दिशा निर्देश हम सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे तथा इसकी परिपूर्ति के लिए हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा यह विश्वास है
कि सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, देश की समग्र जनता और हम सभी मिलकर नशे के विरुद्ध इस अभियान को सशक्त सफल बनाएंगे। अब मैं आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय तथा उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभागार के बाहर एकत्रित हों। धन्यवाद। हाँ हाँ करवा दें। सभी महानुभावों को सूचित करना चाहूंगा कि ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात भोजन की व्यवस्था ब्लू जिंजर रेस्टोरेंट में की गई है। आपसे निवेदन है कि भोजन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। यस अमरीश सर, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन सेशन अभी शिवमोगा में संपूर्ण हुआ है। इसलिए डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी, प्रो चांसलर and campus director of Karnataka, Shimoga, I will extend gratitude on behalf of Shimoga citizens, sir. Dr. Dharmesh Kumar Prajapati, Assistant Registrar, Rashtriya Raksha University, Gujarat. आपका भी धन्यवाद। श्री VP Singh Shekhawat, Campus Developmental Officer, thank you very much, sir. Shri Atish Barok, sir, thank you very much on behalf of Shimoga District Office and Shimoga citizen. Srinivas sir, Deputy Director, Social Welfare Department. Shri Datta sir, MP PA. Thank you very much, sir. ಹಾಗೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ SRS ಚಿನ್ನು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಕೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.